Okay, all are there. I think total number of students, it looks total number of students are 48. Hmm? Should I start? Can you hear me, everyone? Okay, okay, I will start. Hmm? How many lectures have been conducted since morning? Very good. Okay. Okay, can you see my screen? I have shared the screen now. Drowning, you can see drowning. Yes, now we will start with new topic that is now I will, okay, I am calling it as new topic, but we are still in aspexia only. We are still in aspexia. This is the type of aspexial death, what we have seen up to yesterday. We have seen suffocation, we have seen hanging, we have seen strangulation. In suffocation, there is obstruction of the air passage from inside, obstruction of the air passage from outside. Obstruction of the air passage from outside is called as, anyone? It is called as obstruction of the air passage from outside is called as, पढ़ के बोलो चलो, smothering. It is smothering, and obstruction of the air passage from inside is called as choking. I have told you the examples of this: overlying in case of smothering, overlying or obstruction of the nose and mouth by plastic bag, by hand, by cloth. Then choking, gagging, then cafe coronary, that is the sudden collapse of the person while eating because entry of the food particle into the respiratory tract. It causes sudden protective laryngospasm, because of which patient suddenly collapse and it looks like heart attack. That's why it is called as cafe coronary. Okay, so these all types of aspexia, these all types of aspexial deaths we have seen. Now we will go to one very important topic from aspexia only, that is drowning. Drowning, पाण्यात बुडून मरणे. Drowning. So it is also repeat. I think this is the most commonly asked question. This is the most commonly asked question in exam. सबसे ज़्यादा बार पूछा गया रहेगा ये question in 10 mark question also, and if not asked as a 10 mark, will also be asked as a 5 mark short note. There are some other small topics are also there that I will tell you which can be asked as a 5 mark short note. So we'll see in detail about drowning. So drowning is asphyxia. It is the asphyxial death in which access of air to the lungs is prevented by submersion of body in water or any fluid. In any fluid, not necessary only water. So access to the air, access of the air to the lungs, access of air to the lungs is prevented by submersion of body in water. तो क्या होगा, respiratory tract में जो bronchial tree है, that will be filled with the water. I am saying it water, it can be any liquid. किसी भी चीज में, liquid चीज में गिर के आदमी डूब के मर सकता है, but we will see. I will every time I will say water only. So पानी में गिरने के बाद क्या होगा, large amount of water will be inhaled. Large amount of fluid or water will be inhaled, and that air that is present in the whole bronchial tree, right from trachea, right from trachea to the alveolus, छोटे से छोटा alveolus, वहाँ तक जहाँ कहीं भी air होनी चाहिए, that all space will be filled with water or with the liquid. So gaseous exchange will not occur and person will die by asphyxia. So asphyxial death in which access of air to the lungs is prevented by submersion of body in water or any other fluid. And another thing, for drowning, पाण्यात बुडून मरण्यासाठी, for drowning, complete submersion is not necessary. म्हणजे तो अख्खा माणूस डोक्यापर्यंत, पायापासून डोक्यापर्यंत 7-8 फूट पाण्यामध्ये, 10 फूट पाण्यामध्येच बुडाला पाहिजे असं काही नाही. So complete submersion is not necessary.
the sufficient amount of fluid, the sufficient amount of fluid or water which will enough to cover the nostril and mouth can cause death of the person. म्हणजे माणूस 7-8-10 फूट पाण्यातच बुडून मरेल असं काही नाही. हार्डली 1-2 फूट पाण्यामध्ये सुद्धा की ज्याच्यामध्ये त्याचं नाक आणि तोंडामध्ये पाणी जाईल एवढं जरी पाणी असेल तरी त्याच्यात मरू शकतो. नाव यू माइट रिमेंबर a few years back, maybe hardly 2-3 years back, one incident has occurred, that is death of the actress Sridevi. You might have heard or read in the newspaper and in the TV channel. How she died? Anyone remembers how she died? Sridevi? Anyone remember? Yes. Now you can imagine how much is the depth of bathtub. कितना होगा? Hardly 1-2 feet. हम्म? तो वो might be under the influence of some narcotic या maybe alcohol whatever. She was unconscious, मतलब वो अचानक से बेहोश हो गई and she fell with mouth downwards into the bathtub. अभी वो bathtub इतना गहरा भी नहीं था 5-10 फुट की जिसमें कोई आदमी डूब के मर जाए. So only that much water which will enough to cover the mouth and nose can cause death of the person by drowning. Why I give you example? समझ में आया? सिर्फ नाक और मुंह भी पानी में जाता है तो air entry into the respiratory tract will be prevented and that will cause death by drowning. समझ में आया? So sufficient fluid to cover the nostril and mouth. थोड़े से पानी में भी. Another thing I tell you, मतलब just to explain the same point, I'll give you one example. कई बार बच्चे बाथरूम में समझो अकेले, छोटा बच्चा हार्डली 1-1.5-2 साल का बच्चा है समझो, वो बाल्टी जो रहती है हम नहाने के लिए जो लेते हैं हार्डली 1-1.5 फुट हाइट रहता है उसका, 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट इतना हाइट रहता है वो बाल्टी का जिसपे हम पानी लेते हैं नहाने के लिए. तो समझो जस्ट इमेजिन आधे या आधे से थोड़ी ऊपर इतना पानी भरा हुआ है उस बाल्टी में. एक आधा छोटा बच्चा घर में खेलते खेलते उस बाल्टी के पास गया और वो बाल्टी में झुक के उसमें हाथ डाल के खेल रहा है. हम्म? वो बाल्टी में हाथ डाल के पानी के साथ खेल रहा है. अचानक वजन की वजह से क्या होगा? वो बच्चा विल फॉल इनटू द, मतलब सर केबल उसके पैर उठ जाएंगे हवा में. जब वो बाल्टी में झुका हुआ है उसके अचानक से पैर उठ जाएंगे हवा में एंड दैट स्मॉल बॉय और गर्ल, हार्डली 1.5-2 साल का बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा, अचानक से वो बाल्टी में गिर जाएगा. तो क्या होगा? उसका मुंह उस पानी में चला जाएगा. उसका पूरा चेहरा पानी में चला जाएगा. एंड व्हाट विल हैपन? द बेबी विल डाई विदाउट मेकिंग नॉइस. बिल्कुल आवाज आए बगैर वो वैसे मर जाएगा, वो डूब के, पानी में डूब के. Because mouth and nose have been submerged into the water. Got? So very small amount of water which will be enough to cover the mouth and nose. So ऐसे भी किसी बच्चे की मौत हो सकती है just by मतलब उसका नाक और मुंह अगर पानी में जाता है तो will cause drowning. Now we'll see classification of drowning. So got what is drowning? Drowning is asphyxial death in which the access of the air to the lungs is prevented by the submersion of body in water. Complete submersion is not necessary. Only that much fluid which will cover the nostril and mouth will be enough to cause death by drowning. Now, let's see classification. Classification: typical drowning and atypical drowning. So, typical drowning is obstruction of the air passage and lungs by inhaled fluid. मतलब जैसा अभी अभी मैंने तुम्हें जैसा बताया कि the whole respiratory tract, the air present in the respiratory tract or what we call it as bronchial tree, alveolus से लेके trachea तक, the whole bronchial tract will be filled with water and all the air present in the bronchial tree will be replaced by air. कि जहाँ कैरेक्टरिस्टिक ड्राउनिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड अ टिपिकल ड्राउनिंग. सो ऑल द साइंस ऑफ ड्राउनिंग विल बी प्रेजेंट ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. So if any person dies by such replacement of air in the respiratory tract by water, this type of death is called as typical drowning, where all the signs of drowning on postmortem examination will be present. Then atypical drowning जहाँ respiratory tract में पानी नहीं भरता है. Ideally what we have seen in the definition or what I have told you up till now,
there has to be replacement of air in the respiratory tract by water, any fluid. I will say water only. But other than the person can die after falling into the water, पानी में गिरने के बाद किसी और चीज की वजह से भी वो आदमी मर जाएगा, not because of replacement of the air in the respiratory tract by water. So all those varieties are called as atypical drowning, where little or no water enters the air passage. Little or no water. Respiratory tract में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा, मतलब वो आदमी पानी में गिरने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में पानी नहीं जा रहा, फिर भी वो आदमी मर जाता है. दैट इज अटिपिकल ड्राउनिंग. इट्स एग्जांपल्स आर ड्राई ड्राउनिंग, immersion syndrome, submersion of unconscious, and near drowning. I will explain all these four types. In the next slide I will explain all these four types. So atypical examples of atypical drowning where no water enters the respiratory tract are dry drowning, immersion syndrome, submersion of unconscious person, and near drowning. Now we'll see all the details of typical or wet drowning. I will explain all these atypical drowning after typical drowning. So typical drowning also called as wet drowning, क्योंकि यहाँ actually respiratory tract में पानी जाता है, whatever we have studied in the introductory part. The air in, I repeat, air in the respiratory tract is replaced by water, and the person dies by the actual pathological changes that are taking place in the drowning, and all the characteristic features of drowning will be present in typical or wet drowning. So water is inhaled and victim will get severe chest pain because large amount of water will enter the lungs, and it will create some pressure and will cause severe chest pain. Now there are two types of typical drowning. Two types of typical drowning. One is freshwater drowning and another is saltwater drowning. So we'll see. Now I tell you, नदी के, कैनाल के या डैम के पानी में कोई आदमी डूब के मरता है, एखादा छोटा सा तालाब असेल, टैंक रहेगा, स्विमिंग टैंक रहेगा, कोई डैम रहेगा, नदी रहेगी या कैनाल रहेगा, तो ये सब जो है दैट इज फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर. और व्हाट इज द सॉल्ट वाटर? सी. अगर कोई आदमी समुन्द्र में डूब के मरता है, खारे पानी में, सॉल्ट वाटर में, so the pathological changes will be completely different. So in freshwater drowning, pathological changes and cause of death will be completely different, and in saltwater drowning it will be completely different. That difference we will see now. So in freshwater drowning, large quantity of water will cross the alveolar membrane into circulation. So imagine the person has fallen into the river or any canal, the fresh water, जो पाणी खारा नाही आहे, आपण त्याला मराठीमध्ये गोड्या पाणी म्हणतो. गोड्या पाणी आणि खाऱ्या पाणी. सो गोड्या पाण्यामध्ये एखादा माणूस नदीच्या, कॅनलच्या, एखाद्या तळ्याच्या पाण्यामध्ये एखादा माणूस पडला, तर large quantity of water, the water will enter the respiratory tract in the bronchial tree, and large amount of water will cross the alveolar membrane into the circulation. म्हणजे हे जे काही रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये गेलेलं पाणी आहे, that water will cross the alveolar capillary membrane and will enter the systemic circulation. Now because it has entered the systemic circulation, now its pH, that instead of pH I will say specific gravity. Specific gravity is not matching with the blood. Specific gravity of this fluid, fresh water, is not matching with the blood. It is lower than blood. That's why what will happen? RBCs will undergo swelling and they will break down. So RBCs will undergo breakdown, what we call it as hemolysis. Large amount of potassium will be liberated because of breakdown of the RBCs and all. Now circulation will suffer from 50% डाइल्यूशन इन 2 to 3 मिनट्स. मतलब कोई भी आदमी पानी की फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर पानी में गिरने के बाद 2 से 3 मिनट में उसका ब्लड वॉल्यूम 50% से बढ़ जाएगा. Why? Because large amount of fluid. Now this movement is because of you can say osmotic movement, because of the changes in the osmotic pressure. Now the fresh water is having less specific gravity and blood is having a bit more specific gravity as compared to this fresh water. So large amount of fluid part will be pulled from alveoli or from the respiratory tract into the pulmonary circulation. And what will happen?
and this this water that has entered the blood will circulate freely in the circulation, so circulatory volume of the blood will increase by 50%, and its dilution, the blood will be diluted by 50%, and because of which there will be anoxia, hypervolemia, increased blood volume. Just I told you, increased blood volume, potassium excess and sodium deficit will be there, and anoxia and potassium excess will cause ventricle. Now potassium is very important to maintain the muscle activities, not only skeletal muscle but also the cardiac muscle. If the potassium levels in the body are within normal limits, all the muscles will function properly, but if potassium excess is there, the cardiac muscles will not be able to function normally, and that's why, because of potassium excess, ventricular fibrillation will occur and death will occur within 4 to 5 minutes. So got the changes. If the person falls into the fresh water, large amount of fluid, because of osmotic pressure changes by the moment of osmosis, large amount of fluid will move from alveolar through alveolar capillary membrane into the circulation. Blood will be diluted 50 times, 50%, blood will be diluted by 50%, hypervolemia will occur, potassium excess will occur, and it will cause ventricular fibrillation. It will affect the myocardium, ventricular fibrillation will occur, and death will occur within 4 to 5 minutes. Now exactly opposite to that is salt water drowning. If any person falls in or drowning in सी, समुंदर के पानी में जो बहुत ज़्यादा खारा रहता है, वहाँ बहुत सारे सॉल्ट्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा खारा रहता है. सो इफ एनी पर्सन इज ड्राउनिंग इन सॉल्ट वाटर, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी, नाउ देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स एंड ऑल्सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मच मोर than blood. So when this specific the salt water with high specific gravity will enter the blood, will enter the respiratory tract, what will happen, large amount of water part, large amount of fluid part will be pulled into the lungs through alveolar capillary membrane. क्यों? Because of high specific gravity. इसका specific gravity बहुत ज़्यादा है. So blood में जो water part है, what we call it as plasma, so whatever the water part is present in the blood, that will be that will move from circulation to the lungs again through the same channel, that is alveolar capillary membrane. पहले वाले में क्या हो रहा है, I just want to explain you the difference. पहले वाले में क्या हो रहा है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में, एनीवन, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में क्या हो रहा है, पानी कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, यस एनीवन, फ्रेश वाटर में पानी कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, नो वन. अरे अभी तो एक्सप्लेन किया ना मैंने, ध्यान ही नहीं है किसी का लेक्चर में. जस्ट आई टोल्ड यू हार्डली 2 मिनट्स बैक, फ्रेश वाटर में गिर के अगर कोई डूब रहा है, व्हाट विल हैपन, फ्रॉम वेयर द फ्लूइड विल मूव और द वाटर विल मूव, हाँ, इनटू द सर्कुलेशन, फ्रॉम लंग इनटू द सर्कुलेशन. यू आर गेटिंग, नाही कळलं, परत सांगू का, इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड टेल मी, आई विल रिपीट, I will repeat. If you are not understood, I will repeat. You tell me. Yes, yes. Goes into circulation. का जातं ते कळलं का तुम्हाला, का जातंय, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर. कारण पाण्याचं साध्या पाण्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर कमी आहे आणि ब्लडचं थोडंसं जास्त असल्यामुळे काय होईल, लार्ज अमाऊंट ऑफ फ्लुइड विल मूव्ह फ्रॉम अल्व्हिओलर स्पेस. कारण सगळे अल्व्हिओलर आता पाण्याने भरलेले आहेत ना, सगळे अल्व्हिओले पाण्याने भरलेले आहेत. सो दॅट फ्लुइड फ्रॉम अल्व्हिओलाय, दिस वॉटर फ्रॉम अल्व्हिओलाय विल मूव्ह इनटू द blood, into the circulation through alveolar capillary membrane, and it will cause dilution of the blood, breakdown of the RBC, liberation of the potassium, and pathological changes will occur. It will cause increased blood volume. It will cause increased blood volume, and patient will die by ventricular fibrillation. कळलं का, ही पॅथॉलॉजी पहिली कळली का तुम्हाला, देन आय विल गो टू सी वॉटर. कळते का, हे कळलं नसेल तर मला सांगा.
बोलत का नाही, मग उत्तर का देत नाही? कळलं का तुम्हाला काय होतं ऍक्च्युली फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग मध्ये? गॉट एव्हरीवन? अगेन आय एम आस्किंग. दीपक कळतंय का? Okay. Now I will explain exactly opposite to that is uh, salt water drowning. What happens in salt water drowning? Because of hypertonicity of the inhaled water. So any person, just imagine any person has fallen into the sea, doesn't know swimming, large amount of water will enter the respiratory tract. Now which water? Salty water, sea water, जहाँ बहुत ज़्यादा salt है, that is a hypertonic fluid will enter the respiratory tract. तो क्या होगा? Large amount of fluid will be pulled, blood, fluid or water will be pulled from pulmonary circulation into the alveolar space, exactly opposite to fresh water drowning. तो क्या होगा? Large amount of water will get accumulated in the lungs and it will cause pulmonary edema. तो lungs में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा. So pulmonary edema will occur. It will cause hypovolemia. What do you mean by hypovolemia? Decrease circulating blood volume. Decrease circulating blood volume is. क्यों hypovolemia हो रहा है पेशेंट को? लंग्स मध्ये येतोय, सगळ्या लंग्स मध्ये येतोय. वॉटर पार्ट फ्रॉम द ब्लड इज मुव्हिंग थ्रू द ऑस्मोसिस इनटू द अल्व्हिओलाई, इनटू द लंग्स. आणि फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग मध्ये काय होतंय? हायपर ओलेमिया होते. व्हॉट इज हायपर ओलेमिया? इन्क्रीज व्हॉल्यूम ऑफ सर्क्युलेटिंग ब्लड. का होतोय? आता ब्लड व्हॉल्यूम का वाढतोय ब्लडचा कळलं का आता तुम्हाला? मला वाटतं आत्ता कळलं असेल तुम्हाला. ब्लडचा व्हॉल्यूम का वाढलाय फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग मध्ये? हा, ऑस्मोसिसमुळे काय झालं? फ्लुइड कुठून कुठे मूव्ह झालं? हा, अल्व्हिओलर स्पेस जी आहे, अल्व्हिओलर स्पेस मधून द फ्लुइड हॅज मूव्ड इन टू द सिस्टमिक सर्क्युलेशन अँड दॅट्स वाय देर इज डायल्युशन ऑफ द ब्लड अँड इन्क्रीज व्हॉल्यूम ऑफ द सर्क्युलेटिंग ब्लड इन फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग. आणि सॉल्ट वॉटर ड्राउनिंग मध्ये काय होतंय? Large amount of fluid will move from circulation into the alveolar space. So circulating volume of the blood will be reduced. Person will get hypovolemia. Circulating volume कमी झाल्यामुळे काय होईल? Circulatory shock. Patient will develop hypovolemic shock. Hypovolemic or circulatory shock. It will cause cardiac standstill and patient will die within 8 to 12 minutes. आता फरक बघा. इथे डेट कशामुळे होतीये फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग मध्ये? व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन. दॅट इज बिकॉज ऑफ पोटॅशियम एक्सेस. बिकॉज ऑफ पोटॅशियम एक्सेस देर विल बी ventricular fibrillation. Death will occur within 4 to 5 minutes. Death will occur within 4 to 5 minutes. And in salt water drowning, heart activity will stop, cardiac activity will stop and person will die within दुप्पट वेळामध्ये, त्याच्या दुप्पट वेळ लागतो. फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग मध्ये साधारणपणे माणूस 4 ते 5 मिनिटांमध्ये मरतोय आणि सॉल्ट वॉटर ड्राउनिंग मध्ये त्याचा फॅटल पिरियड, आपण फॅटल पिरियड म्हणूयात त्याला, तो फॅटल पिरियड इज स्लाइटली लॉंगर म्हणण्यापेक्षा डबल. इट टेक्स अराउंड 8 to 12 मिनिट्स फॉर डेथ टू ऑकर. आता मला सांगा, आता काही अडचण आहे का कळायला? काही फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग आणि सॉल्ट वॉटर ड्राउनिंग दोन्ही मधला फरक कळायला? ऍक्च्युअल पॅथॉलॉजी कशी होती कळली का? आय विल रिपीट अगेन. कळलं नसेल तर सांगा, म्हणजे कारण हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे. एक्झाम मध्ये याच्यावरच मार्क मिळतात तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ पॅथॉलॉजिकल चेंजेस आर ऑकरिंग इन सॉल्ट वॉटर ड्राउनिंग अँड हाऊ द पॅथॉलॉजी इज ऑकरिंग इन फ्रेश वॉटर ड्राउनिंग. आता कळलं, सॉल्ट वॉटर ड्राउनिंग मध्ये पेशंटला हायपोओलेमिया होणार आहे बिकॉज ऑफ high osmotic pressure, because of presence of so many salts and all in the salt water which is present in the lung. A large amount of fluid will move into the alveoli, from blood into the alveoli through alveolar capillary membrane. Circulating volume of the blood will be reduced and person will suffer from hypovolemia, circulatory shock, cardiac standstill and death will occur within 8 to 12 minutes. कळलं? Okay then. Now we will see some of the examples that I have enlisted here. You remember I have enlisted here dry drowning. See, dry drowning, immersion syndrome, submersion of unconscious and near drowning. These are the 4 types of atypical drowning. Atypical drowning is asked as a separate 5-mark short note. Atypical drowning is asked as a 5-mark short note. So you will have to explain in short about all these 4 types. Atypical drowning.
आणि टिपिकल ड्राउनिंग विचारलं तर यू विल हॅव टू राईट द पॅथॉलॉजी ऑफ बोथ फ्रेश वॉटर अँड सॉल्ट वॉटर ड्राउनिंग. सो आय विल एक्सप्लेन अबाउट अटिपिकल ड्राउनिंग. म्हणजे याच्यामध्ये ॲक्च्युली पाणी रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जात नाही, बट स्टील पर्सन इज डाईंग बाय drowning. That's why we are calling it as atypical drowning. So I will explain atypical drowning. First is dry drowning. The name only tells you. The name only tells you. अजिबात पाणी रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जात नाही किंवा अगदी थोडं पाणी रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जाते, बट पर्सन डाईज बाय बिकॉज पाण्यात पडून मेलाय म्हणून आपण त्याला ड्राउनिंग म्हणायचं. बट water is not entering into the respiratory tract. So 20% of all the submersions, मतलब पानी में डूब के जो मौत होती है उसमें से करीबन 20% deaths of all the submersions are because of dry drowning. When now why it occurs? I tell you how the dry drowning occurs. When the water enters nasopharynx and larynx, नाका तोंडातून पाणी जाऊन जेव्हा रेस्पिरेटरी ट्रॅक कडे पाणी जातं, it will first have to cross larynx. And you know physiology of larynx or protective mechanism of larynx. Whenever any solid particle or whenever any drop of liquid आपल्या घशामध्ये जेवताना पाणी पिताना अन्नाचा एक कण किंवा पाण्याचा एक थेंब जरी गेला तरी आपल्याला ठसका लागतो ना लगेच. That is the function of larynx. So whenever the water will enter the larynx, larynx will undergo protective spasm. It will prevent the entry of water into the lower respiratory tract. So because of laryngeal spasm, little or no water enters the air passage. आणि याच्यामध्ये आता माणूस का मरेल? अजिबात पाणी खाली रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये गेलेलं नाही. So why the person will die? The person will die because that person will not be able to breathe. Larynxच बंद झाले, larynxच tightly बंद झाले, the patient's respiration बंद होईल and patient will die because of asphyxia. But good thing about this dry drowning is these are the best type of submersions for resuscitation. अशा माणसाला जर पटकन तुम्ही 5-10 मिनिटात पाण्यातून बाहेर काढलं, वाचवलं तर त्याचे वाचण्याचे चान्सेस जास्त असतात, कारण water has not entered the respiratory tract, complications have not occurred in the lung, chances of infections are very low. So this type of drowning, dry drowning is best type for resuscitation. कळलं का काय होतं ड्राय ड्राउनिंग मध्ये? why we are calling it a dry drowning? Because no water is entering the respiratory tract because of laryngospasm. Little or no water enters the respiratory tract because of laryngospasm, and the person will die because of asphyxia, stoppage of respiration because of acute or severe laryngospasm. This is dry drowning. Second type of why we are calling it as atypical drowning, कारण actually पाणी respiratory tract मध्ये जातच नाही. That's why we are calling it a dry drowning. Then second type of atypical drowning is immersion syndrome. Immersion syndrome, the death occurs by vagal inhibition. It is rare type because of sudden impact with cold water. It causes vagal inhibition. Sudden म्हणजे अशा म्हणजे अगदी साधं उदाहरण देतो तुम्हाला. तुम्ही अचानक तुमच्या अंगावर असं थंड पाणी पडलं किंवा अंघोळ करताना थंड पाण्याने अंघोळ करताना पहिला मग जेव्हा आपण पाण्याचा अंगावर घेतो थंड पाण्याचा, एकदम असं आपलं सगळं अंग आखडून आणि श्वास कोंडल्यासारखा होतो ना, श्वास सुद्धा घेता येत नाही आपल्याला. दॅट इज बिकॉज ऑफ वेगल इनिबिशन, बिकॉज ऑफ सडन इम्पॅक्ट ऑफ कोल्ड वॉटर. Because of sudden impact of cold water, the person goes into vagal shock, vasovagal shock. That is because of vagal inhibition. And when the vagus will be inhibited, now you know it is a very important nerve which controls the cardiac activity. आपल्या हार्टची पंपिंग ऍक्शन जी आहे, that is controlled by vagus nerve. So अचानक खूप थंड पाण्यामध्ये एखादा माणूस पडला किंवा उडी मारली, so what will happen? Sudden impact of cold water will cause vagal inhibition and person will die because of cardiac arrest. It can also occur in case of excessive alcohol or falling or diving with feet first. म्हणजे आता पाण्यामध्ये जे लोक स्विमिंग करतात, मुलं मुली, तुम्ही स्टुडंट पैकी तुमच्यापैकी कोणी स्विमिंग करत असेल तर यू नो द एक्झॅक्ट वे ऑफ डायव्हिंग द वॉटर. म्हणजे पाण्यामध्ये उडी मारण्याची, म्हणजे ते सूर मारणे म्हणतो ना, पहिल्यांदा तुमचं डोकं खाली गेलं पाहिजे, मग छाती, मग पोट आणि सगळ्यात शेवटी पाय पाण्यामध्ये गेले पाहिजे. सो इफ देर आर फॉल्टी टेक्निक्स ऑफ डायव्हिंग, म्हणजे फीट फर्स्ट म्हणजे डायरेक्ट उभं राहून, काठावर उभं राहून डायरेक्ट उभ्या उभ्या तुम्ही पाण्यामध्ये उडी मारली, किंवा क्लम्सी डाइव विथ हॉरिझॉन्टल एंट्री इन द वॉटर विल कॉज ब्लो ऑन द ॲबडोमेन. आय विल जस्ट टेल यू. ओके, आय जस्ट टेल. म्हणजे अशी उभ्या उभ्या डायरेक्ट उभ्या उभ्या उडी मारली पाण्यामध्ये, किंवा दुसरे तुम्ही काठावर उभे आहात,
काठावर उभे तर अशी असा सूर मारायचा आहे पाण्यामध्ये. पहिलं डोकं खाली गेलं पाहिजे. दिस इज द राइट टेक्निक ऑफ जम्पिंग इंटू वॉटर. पण काही लोक काठावर उभे आहेत आणि अशी पडतात पाण्यावर डायरेक्ट. व्हेन दे आर हॉरिझॉन्टल एंट्री, व्हॉट वी कॉल इट एज, म्हणजे असं पाण्यामध्ये जाण्याऐवजी दे आर डायरेक्टली जम्पिंग लाईक दिस. सो व्हॉट विल हॅपन, because of the sudden impact of water on the chest and abdomen. On the chest and abdomen, what will happen? The person, because of the severe pain and severe pressure, it will cause vasovagal shock. It will cause vasovagal shock, and person will die because of vagal inhibition. गॉट कळते का? याच्यामध्ये सुद्धा अजिबात पाणी रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये गेलेलं नाही, पण माणूस पाण्यात पडून मेला. दॅट्स वाय वी आर कॉलिंग इट अ ड्राउनिंग. सो इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ अटिपिकल ड्राउनिंग. यू आर गेटिंग, let me know you are getting the techniques or different causes of death by drowning. One is laryngospasm, that is dry drowning, and second is vagal inhibition. Vagal inhibition by sudden impact of cold water or sudden entry into the cold water, or second type faulty techniques of diving. Faulty techniques, असं डायरेक्ट एखादा माणूस पाण्यावर पडत असेल आडवा हॉरिझॉन्टल, it will cause pressure, it will cause sudden impact of water on the abdomen, will cause vagal inhibition, and person will die without entry of water into the respiratory tract. Got? Are very nice mask. Okay. Got? And the loss of consciousness is instantaneous. The death will occur in a few minutes, and there will be no signs of drowning. Here, no signs of drowning will be present on post-mortem examination because no water has entered the respiratory tract. Okay, now third type of atypical drowning is submersion of unconscious. मतलब पानी में जाने के बाद दूसरी किसी वजह से पर्सन अगर बेहोश हो जाता है, so victim of epileptic, or the person who has heart disease, or the person is drunk or has got some head injury और डिजीनेट डिश हाइपरटेंशन, मतलब अगर वो उस आदमी को हाइपरटेंशन है, दूसरी कोई हार्ट की बीमारी है, या बहुत ज़्यादा दारू पिया हुआ है, दारू पीने के बाद अगर वो पानी में जाता है और हैज़ गॉट हेड इंजरी. नाउ आई टेल यू, हेल्दी पर्सन समझो वो ऐसा पानी में जाता है. दिस इज द राइट वे ऑफ डाइविंग. राइट वे तो है, लेकिन क्या होगा, वो अगर नीचे जाके उसका सर अगर नीचे पत्थर को एखाद्या खडकावर वगैरे आपटलं, जोरात पत्थर पे वगैरे ऐसा जोर से गिर जाता है पानी में, स्ट्राइक अगेंस्ट व्हाट विल हैव, हेड इंजुरी will cause unconsciousness and person will die. So these are some of the वेज ऑफ डेथ. सो दिस सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो जाएगा हेड इंजरी की वजह से, इपिलेप्सी की वजह से, या हाइपरटेंशन की वजह से. बाय एनी ऑफ दिस कॉजेस द पर्सन विल बिकम अनकॉन्शियस इन द वाटर एंड विल डाई. दैट इज सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस. अब वो अनकॉन्शियसनेस किसी भी चीज की वजह से आ सकता है. And fourth type is near drowning. Near drowning or secondary drowning syndrome. This is completely different. I will just tell you. So this near drowning or secondary drowning, one second. Okay. Near drowning or secondary drowning syndrome is, मतलब समझो, I tell you first. I will just explain you it in simple words. समझो कोई आदमी पानी में गिरा है, उसे 2-5 मिनट में आजू बाजू के लोगों ने उसे बचाया, पानी के बाहर निकाला, उसके छाती में पेट में जो भी पानी जमा है वो भी सब निकाल दिया. द पेशेंट हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बट पेशेंट विल डाई आफ्टर मे बी 5 days, 1 week, 10 days because of secondary infection. The person will die because of secondary infection. The person will die because of other complications of lung infection, oxygen lack and whatever. Got? मतलब उसे पानी में से बाहर निकाला है, पानी में से बाहर निकाला है, लेकिन तो दूसरे किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाता है. दैट इज कॉल्ड एज नियर ड्राउनिंग और सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम. कैन बी आस्क्ड एज अ 2 mark question. So the death will occur because of infection from contaminants in the inhaled water, which will cause lung complications. मतलब पानी में अभी कोई आदमी पानी में गिर के मरता है, तो पानी तो एकदम ऐसा मिनरल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर,
Okay, should I start? 36 participants are there. Okay, I will start. You can see my screen? Hello, can you hear me? Everyone? Okay, I will just take this short topic, hardly 2 minutes, this last topic, and we'll stop here. So, near drowning or secondary drowning syndrome, so person has fallen into the water, has been revived from the water, उसे सक्सेसफुली पानी से बाहर निकाला है और वो जिस पानी में गिरा है वो तो एकदम साफ सुथरा पानी नहीं रहेगा, पीने लायक आरओ का पानी, फिल्टर का पानी, पानी तो गंदा कहीं का गटर का वगैरह कहीं गंदा पानी भी होगा. सो देयर कैन बी सो मेनी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर. वो जिस पानी में गिर के डूब रहा था उसमें बहुत सारे कंटेमिनेंट्स रहेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, पता नहीं क्या क्या गंदगी रहेगी उस पानी में. सो देयर विल बी इन्फेक्शन फ्रॉम द कंटेमिनेंट्स एंड दे ऑल विल बी इनहेल्ड. दे ऑल विल बी इनहेल्ड एंड दे विल कॉज लंग कॉम्प्लिकेशन. पानी में डूब रहा था, उसे निकाला, उसके लंग्स में से पानी निकाला, पेट में से पानी निकाला, पेशेंट रिकवर हुआ, बट उसके साथ जो बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस है, जो कुछ भी लंग्स में गया, सर्कुलेशन में गया, दे विल लेटर ऑन कॉज द कॉम्प्लिकेशंस. देन पानी में गिरने के बाद वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेगा बचने के लिए. बचने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेगा. उसकी वजह से पेशेंट विल हैव ऑक्सीजन लैक, टायर्ड हार्ट मसल्स एंड सेरेब्रल एडिमा, दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस, जो पानी, बहुत ज़्यादा पानी लंग्स में जाने की वजह से जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, इसकी वजह से द पर्सन विल डाई आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज. सो विक्टिम rescued from the water will respond nicely to the treatment, will be alert, will breathe nicely, but will deteriorate suddenly. मतलब कुछ दिनों बाद complication में जाएगा. That may be because of infection, because of tired heart muscle, because of cerebral edema. All these things will contribute and will cause death of the person. Got what is near drowning syndrome? Near drowning or secondary drowning syndrome is also asked as a 2 mark question. 2 mark question के लिए आता है तो क्या लिखना है उसमें? The person who has been revived or rescued successfully from the water will survive but will die or will go into the complications because of contaminants present in the inhaled water, oxygen lack, tired heart muscle, and will die later on because of these complications. गॉट अटिपिकल ड्राउनिंग. तो इन चारों भी चीज़ों में पानी तो नहीं जा रहा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, बट पेशेंट इज डाइंग बिकॉज ऑफ अदर कॉजेस लाइक नियर ड्राउनिंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑल. सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस, पानी में गिरने के बाद अनकॉन्शियस होता है हेड इंजरी की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, कन्वर्जन की वजह से, या किसी हार्ट की बीमारी की वजह से. देन immersion syndrome. What is immersion syndrome? That is vagal inhibition, the entry into the very cold water or falling or faulty techniques of diving into the water, and dry drowning because of protective laryngospasm. Protective laryngospasm will prevent the fluid into entering into the respiratory tract, but it will also prevent the air entry, and that's why the breathing will stop and person will die because of asphyxia. Got atypical drowning, everyone? कळते का? So these are the four types. These are the four types. These are the four types of atypical drowning. Okay, I think it's enough now. Today we will stop here. It's nearly 42 minutes. Okay, today we'll stop here. Tomorrow we will continue with the same drowning. Okay, then bye. See you. Bye, everyone. I will end the meeting for all. See you tomorrow. We'll continue with the drowning only. Okay, then bye.